ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाजिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंध अथ द्वादश अध्याय। रघुगणंकर प्रश्न ओ भरतंक द्वारा तार समाधान। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। रघुगणोवाच नमो नमः कारणविग्रहाय स्वरूपतुच्छीकृतविग्रहाय नमो वधूत द्विजबन्धुलिङ्ग निगूढनित्यानुभवाय तुभ्यं। जोरामयार्तस्य यथा गदं सत् निदाघदग्धस्य यथा हिमम्ब कुदेहमाना हि विदस्तदृष्टेर्ब्रह्मन् वचस्ते मृतमौषधं मे। तस्मात् भवन्तं मम संशयार्थं प्रख्यामि पश्चादधुना सुबोधम्। अध्यात्मयोगग्रसितं तवोक्तम् आख्याहि कौतूहलचेतसो मे। यदाह योगेश्वरदृश्यमानं क्रियाफलं सत् व्यवहारमूलं न ह्यञ्जसा तत्त्वविमर्शनाय भवान् मुस्मिन् भ्रमते मनो मे। ब्राह्मणोवाच अयं जनो नाम चलन् पृथिव्यां यः पार्थिवकश्च हेतु तस्यापि चाङ्घ्रोरधिगुल्फजङ्गा जानुरुमज्जु शिरोधरांसः। अंशेऽधिदार्वी शिविका च यस्यां सौवीरराजेत्यपदे स्वास्ते यस्मिन् भवान् रूढनिजाभिमानो राजास्मि सिन्धु स्मृतिदुर्मदान्ध। सत्यानिमांस्त्वम् अधिकस्तदीनान् दिष्ट्या निगृह्णन् निरुनिग्रहोऽसि। जनस्य गोप्तास्मि विकथमानो न शोभसे वृद्ध सभासु धृष्ट। यदा किताबेव चराचरस्य विदामनिष्ठां प्रभवं च नित्यं तन्नाम तुन्यत् व्यवहारमूलं निरूप्यतां सत्क्रिययानुमेयम्। एवं निरुक्तं क्षितिशब्दवृत्तमसन्निधानात् परमाणुभुजे अविद्यया मनसा कल्पितास्ते
येषां समूहेन कृतो विशेषः एवं कृशं स्थूलं मणुबृहज्जत् असत्य सज्जीवम् अजीवमन्यत् द्रव्यस्वभावा सकालकर्मन् नामाजयावेहि कृतं द्वितीयम् ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमेकम् अनन्तरं च बहिर्ब्रह्म सत्यं प्रत्यक्प्रशान्तं भगवत्शब्दसंज्ञं यद्वासुदेवं कवयो वदन्ति रहुगणैत तपसा न जाति न चेज्जया निर्वपणात् गृहात् वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पाद रजोभिषेकम् यत्रोत्तमश्लोकगुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्यकथाभिघात निसेव्यमाणो निधिनं मुमुख्योर्मितिं सतिं यच्छति वासुदेवे अहं पुरा भरतो नाम राजा विप्लुप्तदृष्टश्रुतसङ्गबद्ध आराधनं भगवत इह मानो मृगोद्भवं मृगसङ्घाद्दतार्थम् सा मां श्रुतिर्मृगदेहेऽपि वीर कृष्णार्चन प्रभवानुजहाति अथो अहं जनसङ्घातसङ्घो विशङ्कमानो बिभ्रतश्चरामि तस्मान्नरसङ्ग सुसङ्गजात ज्ञानासिहैव बिभ्रक्प्रमोह हरिं तदीह कथनश्रुताभ्यां लब्धस्मृतिर्जात्यति पारमध्वन इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे ब्राह्मणो रघुगुणसंवादे 12 भीमस्यापि रणे भङ्गो मुने अपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।